But Maxman and I were just dreaming about Americas versus Europe. It would be just such an amazing clash. It'll be rough to make it happen, but if it does happen, I would say that would be the best rivalry. Yes. Americas versus Europe, you just can't beat that. Americas it would meant definitely to win. be. Americas would win. No. I'm sorry, somebody from Europe. I can't believe you just It done could that. become the new classic. It could become the new classic. Before we get into the matches, though, we want to quickly keep you updated on everything that is going on over the next 3 days. The schedule is as follows. Today, starting today, in just a couple of minutes, actually, we will see the first game, and then 5 more. 6 matches today, 6 matches tomorrow, and another 6 matches on January the 8th. So for the next 3 days, stay tuned. Remember to follow your socials. Remember to last year, 15, 12, 10 in the first 3 places, and obviously 1 additional point for eliminations. Exactly, elimination is going to be pretty important going into it, but also we got to keep in mind, Seven, this is going to be something that impacts it. The circle settings are the same as the league stage. No heal strat is going to happen here. Yeah, and I absolutely love that because I never liked when that happened, okay? It was always one of my less favorable things when we went to Sandhawk, so I'm glad that's not going to be the case, and we're seeing how those teams were able to qualify here. You can see the last chance. I mean, they had it the worst, but that's where 2 of the Brazilian teams came out of, and we're seeing IHC Esports there as well, DRS Gaming. And then when we go to the special invites, Wolf Esports and Alter Ego, I feel like those are the biggest question marks here for this Grand Finals. How are they going to be able to perform since they haven't really gotten a chance to really go up against these teams? And there we have it. We will be starting off with Erangel. The competitive rotation will be as follows. Yeah, of course, going to be starting things off with Erangel followed up with Miramar, Sanok, Erangel once again, Miramar, and then Erangel. 3 Erangels. If you can perform well on that Battlegrounds here, Seven, that is going to be your way to stand out on the rankings. Yeah, sorry. I'm just hyped up because we saw Sandhawk there, and also the crowd is getting me hyped up. We've been talking about it for a minute, too. But you mentioned it perfectly. I feel like this teams definitely need to narrow down their performances in Erangel when it comes out to the most. And for some reason, something that we have seen happen over and over again, if they do start bad in those 2 first matches, which is Erangel and Miramar, I hope whatever team it is, uses Sandhawk to kind of just bring it back. And we have seen teams do that before. Exactly. I mean, there's so many things to take into account, but also we're just, I think, just a few minutes away now from jumping into our very first game. Thing is, it's a 3-day event. There are not many games that are going to be happening here. You're never going to be safe. Do not throw a game away. Every point is going to count here. And there we have it. We have teams to watch from... Guys, you already put that in there. Maxman has no godlike stalwarts. बताओ गाइस कौन जीतना चाहिए प्रेडिक्ट करो फटाफट से Makes sense. कौन जीतना चाहिए ये वाले मैचेस को और जो अगला मैच होगा थोड़ा सा लेट हो चुका है लाइव स्ट्रीम में जल्दी बताओ कौन जीतेगा ये वाला मैच I can tell you, Seven, I would like to see if they can try and be in that मेरे हिसाब से take home a trophy. देखते हैं तो Okay, well, you know what? चलो I आगे उनकी स्ट्रीम देखते हैं थोड़ा I don't have them winning the tournament, but I am going to be looking forward to see how लगभग सब ऑनलाइन है भाई सब can they स्काउट बाइक की देखते हैं and स्काउट showcase why they are the back-to-back Grand Finals champions for PMGC. And then I have none other than all. आ गया चलो इनका भाई गजब ही चल रहा है सिस्टम आजकल और इनका देखते हैं थोड़ा क्या है काफी है क्या काफी है मजे करने के लिए नहीं होते तो म्यूट ही रखियो एंड्रेज है सब ऑनलाइन है क्या तुम क्या है सब भाई क्या कर रहे हो टाइम बता दो ड्यूड कोई ठीक है भाई अरे अल्ट्रॉन तेरा मैच देख के ना ये हो गया देख स्काउट को भेज दूं ऐसा जीतेगी इनका अलग ही चल रहा है इनको छोड़ो of the games. Yeah, there's going to be a fair few matches we've got on the cards today. Obviously, we've done one of them, the show match, and then obviously we've had all these really cool announcements. Turkey as well being the next. Oh, we're already confirmed that in, locked that in. That's in the calendars now, which is good news. Obviously, with the new points change as well, going down to 10 for that chicken dinner and getting much less points, down to even 0 towards the bottom end of those placements, which means that eliminations are going to become much more important next year. You're going to have to beat certainly a competitive team. You can't just send towards that center anymore. That isn't the case where you just play for those 12, 13 points towards that top side of the lobby. It's just an impossibility now. So this is going to really, really put a massive change on the terms of performance of a lot of these teams.
However, we will be getting into our first, technically our first game of PMGC 2022 Grand Finals very, very shortly. Already you can see just the masses of support that is out right now for Alter Ego. By the way, that back there, that little sign, that wasn't put up by us. That's the fans. They are very efficient in creating a nice little zone for those guys to stay in, which is beautiful stuff. They bring their own. They bring their own signage. It's brilliant. You love to see it. Yeah, look at the players. They did some redecoration quite quickly. Look, hang on a minute. No. we need to sort this out. Come on. Bring in the signs. Bring in the signs. And they did. Fantastic support being shown for the players in this tournament. You can see them starting to focus in now, Blank. They are very much getting in the zone at this stage. Look at that. Barely moving a muscle apart from those hands. Yeah, IHC definitely looks there to be very serious. Again, for Alter Ego, I think we've met the coach now a few times now, Denny. He's a really great guy, actually, very nice. I think that the major thing that he did for me earlier was he showed me around because I didn't know where I was going. So he was like, I'm very good with directions. And I was like, thank you. And now I've not got lost once. However, I'm sure he's also a very good coach as well. So we're heading into the first game right now, John. Match number 1 of the PMGC 2022 here in Jakarta. Erangel, the first match as it always is, Blank. We will be getting on with guys, the match चालू हो चुका है. This time it's headed from the west side start. to Snovka military base. बताओ गाइस कौन जीतना चाहिए ये वाले मैचेस को. PMGC ग्रैंड फाइनल डे 1 है आज से और अपन लोग डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे इस चीज की. पर पता लगे पहले ये वाला जो मैच है ये जीतेगा कौन. पहले वाला तो मेरे हिसाब से मेरे को ये भी नहीं पता पहला कौन जीता. मैं लेट हूँ थोड़ा, ये जंप करा इन्होंने. स्टार्ट हो गया. सिंगल बंदे जाते हैं क्या गाइस? Also on the east, some players, some teams taking it very, very early. Over towards the west here, you get Demo from IHC. अपन चलते मावी वाले को. लिंपा जा रहा क्वेरी से लेके नोवो रप्रोन रे थोड़ा नोवो नपोए. वो तो लिंपा जा रहा क्वेरी से लेके नोवो नपोए पे. और मेरे को गन फाइट देखने का है. गन फाइट. अरे म्यूजिक बंद करो यार. क्या पागल हो यार. मैं तो ऐसा भाई ये आइडियल का जॉर्जो हिल के एज से लेके. चलो इनका देखते हैं. एक करके बोलो. एक करके. गाइस मच्छी बता. ओ गन फाइट होगी भाई. गन फाइट है भाई. गन फाइट होगी 100% होगी गन फाइट. गाना क्यों लगा रखा है इन लोगों ने? अरे हट जाएगा हट जाएगा. वो अपना अच्छा इन्होंने भी लगाया हुआ है वो. ये बनेगा. सुन पोटैटो हिल. सुनो बंदे के बाद बोल रहा है. देखो क्या तूने दोनों बनने के बाद देख के बोला है ना. नहीं सैंडविच बनेगा. हमारे में बन चुका है. देख के बोला है. मैंने मैं बोल रहा हूँ. और जोन बन गया क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ 2x कर दो. मेरी बात सुनो. 3rd and 4th जोन सैंडविच एंड पोटैटो. मेरा अभी बोल दिया मैंने. चलो ठीक है. 3rd and 4th जोन. कर रहे हैं लोग. चलो इनका भी प्रेडिक्शन देखते हैं. आज नहीं वो तो उसके बाद होगा भाई. मावी का प्रेडिक्शन नेक्स्ट लेवल होता है. अब तक जितना भी प्रेडिक्शन हुआ है मावी का भाई, तुम्हारे हिसाब से जीतना कौन चाहिए? मेरे हिसाब से आईएनएफ चाहिए. आईएनएफ बहुत बढ़िया टीम है भाई. मैं तो फिर ऐसा करता हूं. मैं तो फाइनल जोन बोल देता हूं फिर भाई. गन फाइट मैं तू फाइनल बोल दे. मैं थर्ड बोलता हूं भाई. ये छत पे क्यों चढ़े हुए हैं? सैंडविच अभी उतर ही रहे हैं. भाई ऐसे गाड़ी ले लेके जा रहे हैं भाई अभी तो. ओमेगा हां गाइस ओमेगा रियल लाइफ में भी जॉड है. मेरा तो है ही भाई. क्या कर सकते हैं. लेट्स गो नोवा. अगर नोवा इस बार जीत गए ना चैंपियनशिप, नहीं जीतेगी. नोवा इज अनडाउटली नहीं जीतेगी टीम इन द वर्ल्ड. नहीं जीतेगी. नहीं मेरे को अगर जीत गए तो मावी तो मानेगा ये चीज. क्या चीज? उससे ऊपर टीम ही नहीं है फिर. वो तो अभी भी पता है उससे ऊपर नहीं है. अभी भी नहीं है. पर इस बार स्टैंप लग जाएगा लेजिट. थप्पा कि बेटा सेकंड के लिए ऐसा. वैम्पायर चल रहे भी तो अपनी फॉर्म में यार. गाइस तुम ही कर दो, मैं नहीं करूंगा खुद की तारीफ. इधर वैम्पायर का भी ज्यादा चांस होगा बिकॉज़ बहुत ज्यादा ओमेगा का जोन प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है. हां तो जोन प्रेडिक्ट करता रहेगा ना वो. ओमेगा भाई मैं करते चाहता पर ओमेगा भी अच्छा प्लेयर है पर थोड़ा मेरे को नहीं जमता भाई. क्या कहते हैं ओमेगा और मैं ना मावी से पहले हमारी बात हुई थी. मैं और ओमेगा एक दूसरे को बहुत पहले जानते हैं ओमेगा. पुरानी बातों पे मिट्टी डालो.
कैसा आपको मैं मावी से मतलब पहली बार बात की उससे पहले मेरा और ओमेगा का कॉल पे भी बात मेरे साथ तो गाइस स्काउट की दोस्ती लास्ट में हुई है। सुनना ओमेगा मेरा मतलब बहुत पहले एकदम पहले 2019-18 में। किस दिन बताऊंगा आराम से बैठ के। उस चीज की बात हो रही है जो सबको पता है। ये बिना गन के भाग रहा है। कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो जाके वो खा वो एक वो नया नई चाहिए ना उसको क्या बोलते हैं वो चॉपस्टिक। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। हां भाई ठीक है। हां सॉरी सॉरी भाई लव यू। फर्स्ट ब्लड फ्लूक ने ले लिया भाई। हां भाई ले लिया भाई। ये वीपी नहीं मान रही भाई। मैं तो उनको ही बोल रहा हूं, मैं तो उनको ही सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने आईएनएफ बोल रखा है भाई। मैं तो वीपी को सपोर्ट कर रहा हूं भाई। मैंने भी आईएनएफ बोला। मैं 4am मैं आईएनएफ को सपोर्ट कर रहा हूं भाई। जीसी में सोल जीतेगी। अरे खेल रही होती तो यार क्या लगता है सब कुछ कवर होगा। ला 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 ला। वर्ल्ड तगड़ा चल रहा है भाई मैच इस बार। जितने भी वर्ल्ड की 16 टीमें वर्ल्ड की टॉप 16। आई थिंक ये सेकंड मैच है गाइस। सेकंड मैच बट ब्राजील के बाद हो रहा है। थोड़ा जल्दी हो रहा है पर कोई बात नहीं। आईएनएफ चाइना की भी टीम भाई मेरे को और कुछ पता नहीं। मैं तुम्हें ये जरूर बोल अभी गाइस मैच एंजॉय करते जब तक मैं माइक सर्कल के सेंटर में रहे थोड़ी देर एंजॉय लेते हैं। इसमें पुरानी मेरे को एई के बारे में नहीं पता है। एफएफ पता है। आईएचसी से वही सब पुरानी। बीआरयू कौन सी टीम है? अबे चाइना की वुल्फ्सबर्ग है। ये लोगो ऑफ प्रीमियर लीग के फुटबॉल टीम का एक। हां है तो लोगो वुल्फ्सबर्ग का ये वुल्फ्सबर्ग का है गाइस प्रीमियर लीग की टीम का। क्या एग्जैक्टली वही टीम है? प्लीज लेट मी नो। क्योंकि चाइना की जो टीआई की टीम है अपनी पीएसजी की जो एलओएल खेलती है वो भी पीएसजी की टीम है। तो क्या ये वुल्फ्सबर्ग है? प्लीज लेट मी नो। लोगो तो वही है। हाँ वही है ना। इतनी नॉलेज तो नहीं है हमें। हाँ बे भाई देखो था मावी एक फुटबॉल टीम ने इनको स्पॉन्सर किया मतलब। हाँ भाई इंसान भाई। किसको? ये वुल्फ्सबर्ग चाइना की 9 नंबर पे दिख रहा है WOL। अरे बट वो चाइना के ऊपर है। अरे वो खरीदी है उन्होंने अभी। इतनी बड़ी न्यूज आई थी बे। कितना बहुत बड़ा उसमें प्राइस पूरा किया। तो बेसिकली पहला आई थिंक दिस इज पहली फुटबॉल टीम है जिसने खरीदा है एक टीम को। ये इस टीम का नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ये कोई और टीम के प्लेयर्स है इनका। रुक जा बताता हूँ। क्या SMG है लोग बोल रहे हैं। SMG है। SMG हाँ SMG आ गया भाई